तब तो वही पिक्चर है ओरिजिन एक्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिज़ाइन ए स्टील स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम लोग डिज़ाइन करना सीखेंगे एक स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर जरूरी क्यों। बिफोर डिजाइनिंग स्टील स्ट्रक्चर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई स्टील स्ट्रक्चर इज नेसेसरी टू अस। स्टील स्ट्रक्चर हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी सैल्वेज वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। जैसे अब सैल्वेज वैल्यू क्या होती है वो समझ लेते हैं। सैल्वेज वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर इट यूजफुल लाइफ पीरियड। सैल्वेज वैल्यू स्ट्रक्चर की वो वैल्यू है जो कि हमें मिलती है जबकि उसका लाइफ पीरियड खत्म हो चुका होता है। और ये वैल्यू कहाँ से मिलती है? उसके अंदर जो हमें रीसेल वैल्यू वाले आइटम्स मिलते हैं जैसे कि रिइंफोर्समेंट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से। तो जब कंक्रीट स्ट्रक्चर को हम डिज़ाइन करते हैं उसकी रीसेल वैल्यू के जो आइटम हमें मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं। वेयर एज फॉर स्टील स्ट्रक्चर, जबकि स्टील स्ट्रक्चर की सैल्वेज वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो पूरा का पूरा ही हमें रीसेल वैल्यू में चला जाता है। So this is how a steel structure is more useful than a concrete structure because its resale value is low, hence its salvage value is low. So before starting designing the steel structure, let us consider some relative terms related to steel structure. Today we are going to design a warehouse. आज हम लोग एक स्टील का warehouse डिजाइन करेंगे, उससे related terms हम आज देखें। दिस इज अ पिक्चर टेकन फ्रॉम इंटरनेट। ये एक इंटरनेट से पिक्चर ली हुई है। जो ये टॉप बोर्ड आपको दिख रहा है, टॉप मोस्ट बोर्ड, इसे कहते हैं रिज बोर्ड। यही जो टॉप मोस्ट बोर्ड रहता है उसी के जो पैरेलल्स बोर्ड रहते हैं उन्हें कहते हैं पर्लिन्स। और जो एंगुलर बोर्ड है जो कि एक हार्ट शेप का आपको बन के दिख रहा है इसे कहते हैं हम लोग राफ्ट। द टॉप मोस्ट बोर्ड इज द रिज बोर्ड, द बोर्ड्स पैरेलल टू इट आर द पर्लिन्स एंड द एंगुलर बोर्ड विच आर कनेक्टेड बिटवीन द endmost purlin and the ridge board are called fasteners. So going back to the StaadPRO, StaadPRO में दोबारा जाते हैं। ये हमारी ग्रिड है, इसका हमें कोई काम नहीं है, we don't have any use of it. So let's close it. इसे बंद कर देते हैं। नोड पे आते हैं, let's go to the node, creating the origin 0 0, taking the width of the warehouse as 40 मीटर। warehouse की width हम 40 मीटर ले रहे हैं। height on the warehouse will be 8 मीटर। warehouse की height 8 मीटर ले रहे हैं। पेस्ट। यह हमारा एक फ्रंट एलिवेशन प्लान तैयार हो गया। Here we get a front elevated plan. So let's join all these nodes. Like this. Zooming out. Now taking the node cursor select किया। सेलेक्टिंग दीज टू नोट्स, इन दो नोट्स को हमने सेलेक्ट किया। अब हमें इनका फाउंडेशन के लिए इनको हमें ट्रांसलेशन रिपीट करना है -y डायरेक्शन। वी हैव टू ट्रांसलेट रिपीट इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो टेकिंग y, द फाउंडेशन डेप्थ विल बी 1.5 मीटर। बिग स्टेप एंड we have taken the foundation depth. Similarly, we have to take a node in the middle of this beam so as to provide the ridge board and rafter and purlins. So taking the middle of the board, we can, there is a pop-up window which allow you to save your file. It will appear frequently. ये बार बार आती जाएगी जो कि हमें बोलती है कि फाइल को सेव कर दें। यहाँ पे हम बस नो कर रहे हैं। अब हमें इसका बीम का मिड पॉइंट हमें देना है। तो मिड पॉइंट दो तरीके से दे सकते हैं, या तो यहाँ इंसर्ट नोड, या तो सीधे राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट नोड, एड मिड पॉइंट। टोटल डिस्टेंस हमारी थी 40 मीटर, तो मिड पॉइंट के बाद हमारी पर बीम की डिस्टेंस हुई 20 मीटर। तो इन दोनों बीम को डिलीट करते हैं, इनका काम हो गया। लेट्स डिलीट दिस टू बीम्स एंड हियर इज पॉपअप विंडो व्हिच इज आस्किंग वेयर यू वांट टू डिलीट द नोड्स और नॉट। ये पॉपअप विंडो पूछ रही है कि आपको ये जो बीच का नोड हमने अभी बनाया उसे डिलीट करना है क्या। मैं नो कर रहा हूँ। नो। नाउ वी हैव टू टेक अगेन द नोड कर्सर and here taking the mid node, we have to copy paste here in the upward direction, or we can directly translate it. So here we have both the option. What we have to do, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो हम इसे ट्रांसलेट रिपीट कर सकते हैं या तो हम इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा है आप वो कर सकते हैं। तो मैं अभी ट्रांसलेट रिपीट कर रहा हूँ y डायरेक्शन में।
अब हमें कितना करना है देखते हैं। इस नोड और मिड पॉइंट नोड की डिस्टेंस 20 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट एंड द आउटर मोस्ट नोड इज 20 मीटर एंड एज पर आई एस कोड ये बोलता है कि जो राफ्टर्स का जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ राफ्टर शुड बी इन द रेशियो ऑफ 1:10, वो 1:10 के रेशियो में होना चाहिए। तो अगर ये डिस्टेंस 20 मीटर है तो ये ऊपर कितना जाएगा 2 मीटर। इफ दिस डिस्टेंस इज 20 मीटर द मिड पॉइंट नोड शुड बी अपसाइड इन द y डायरेक्शन and of 2 meter. Why? So we don't click on the link step. Link step पर नहीं क्लिक करेंगे और ओके, ये कौन हो चुका है। पहले बार नोट रीड करना है, लेट्स रीड द प्रीवियस नोट। सो हियर इट इज अगेन एड बीम sorry this now it is about front elevated plan which is ready। ये हमारा फ्रंट एलिवेटेड प्लान है जो कि अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे ट्रांसलेट रिपीट करेंगे जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन में इसे ट्रांसलेशन रिपीट करना है। कितना करना है, हम इसकी लेंथ ले रहे हैं वेयर हाउस की 90 मीटर्स। तो वी आर टेकिंग द लेंथ ऑफ 90 मीटर इन जेड डायरेक्शन। सो अगेन टेकिंग द बीम कर्सर, सेलेक्टिंग this and this। We don't select this because we don't have to translate it in this. Okay, again translation repeat लेंगे, z डायरेक्शन में जाएंगे। z डायरेक्शन में जाने के बाद अब हमें स्पेसिंग देनी, स्पेसिंग हमें देनी है 6 मीटर। एक स्पान हम 6 मीटर का ले रहे हैं, टोटल लेंथ 90 मीटर है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पान 3 जाएंगे। द स्पेसिंग ऑफ फर्स्ट स्पान और एवरी स्पान वी आर टेकिंग 6 मीटर। टोटल डिस्टेंस इज 90 मीटर, so there will be 50 number of spans and click OK. Here it is created. Now we have to add all these. First connect the pins level beam. We are taking a little complex structure so that you can understand how to design a steel structure more clearly. हम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ले रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि स्टील स्ट्रक्चर एक्चुअल में डिजाइन कैसे होता है। नाउ हियर वी आर गोइंग टू द कनेक्ट ऑल द लेफ्ट पर्लिन्स। दिस इज द एंड पर्लिन, ये सबसे बाहर वाली पर्लिन है। सेम इसी का इस साइड भी होगी राइट हैंड में। And now other end purlin we have connected. Here we have one more option to connect, that we can directly connect here from here, but we will not do that because if we do that, that beam will be considered as one individual beam and all load will be distinguished. हम उसको यहाँ से यहाँ भी कनेक्ट कर सकते थे पहले एंड से आखिरी एंड तक, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर सिंगल बीम हो जाएगी और वो फिर उस आने वाली लोड एज ए सिंगल बीम की तरह उसको डिजाइन करेंगे, ना कि ये सिंगल पार्ट। So here it is created. Now again the planes level view of that side, so we have to rotate। planes level बनाने के लिए इसे रोटेट करेंगे। Now again isometric beam वापस जाएंगे। Now we have to create purlins। We have created rafter और we have to create purlins which will be parallel to the ridge board। अब हमें purlins क्रिएट करने हैं जो कि ब्रिज बोर्ड के पैरेलल हो। अब पर्लिन्स क्रिएट करने के लिए हमें नोट्स चाहिए। सो टेकिंग बीम पर सेलेक्ट दिस बीम, हमें यहाँ पे नोट प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ पे अपन राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट नोट। अब हमें नोट कितने प्रोवाइड करने हैं, हाउ मैनी नोट्स वी हैव टू प्रोवाइड। सो अकॉर्डिंग टू IS कोड इट सेज द स्पेसिंग बिटवीन टू पर्लिन्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 मीटर। पर्लिन्स के बीच की स्पेसिंग 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बीम की लेंथ है वो 20 मीटर है,
तो इसलिए लेट अस कैलकुलेट करते हैं. 20 divided by 1.5, we will get 13.44. So we are taking 13 notes here. 13 notes, add n notes. Here we will get. Now, so here we will get the notes. यहाँ हमें नोट मिल चुके हैं. आगे this पे right click, insert node. दोबारा इसी तरह करेंगे. 13 parts, add points. Now we will just add this name. हम ये विंग को select करेंगे. राइट क्लिक, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट, रेफरेंस पॉइंट लेंगे. ओके. जब भी एक पॉइंट को हम क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा. ओके. अगर हम चाहते हैं ये डायलॉग बॉक्स अपीयर ना हो तो कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे. एवरी टाइम वी विल क्लिक ऑन द नोट्स दैट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. सो इफ वी वांट नॉट टू गेट दैट डायलॉग बॉक्स इन फ्रंट ऑफ अस, सो जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक ऑन द नोट्स. Here the values are complete. Get it? So this. Again, pressing escape. Now our geometry is completed. हमारी ज्योमेट्री तैयार हो चुकी है. अभी पर्लिन्स के ऊपर शीटिंग्स होगी जिसके ऊपर जो कि हमें आउटर वेदर से बचाएगा. ये above the पर्लिन्स there will be sheeting which will protect us from the outer weather, and on the left and right. In the front and back there will be gate which will be designed by the architect. आगे और पीछे के गेट जो कहाँ पे देने हैं, क्या कैसे करना है, वो सब आर्किटेक्ट देगा. लेफ्ट राइट में भी यहाँ पे अपन ब्रेसिंग दे सकते हैं, लेकिन वो देखेंगे कि हमारा बहुत सपोर्ट इतना लोड ले रहा है या नहीं ले रहा है. अगर नहीं ले रहा है तो फिर उसके आगे फिर हम ब्रेसिंग करना सीखेंगे. सो नाउ लेट अस डिफाइन इट्स प्रॉपर्टी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फ्रंट व्यू, सबसे पहले फ्रंट व्यू जाएंगे, सपोर्ट लेंगे, क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे. we will create support. We have to select the nodes and assign. नोट सेलेक्ट करेंगे, असाइन करेंगे, सपोर्ट्स आ चुके हैं. ये आप देख सकते हैं सपोर्ट्स आर अवेलेबल. नाउ वी हैव टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी में जाएंगे, स्टील स्ट्रक्चर है इसलिए सेक्शन डाटाबेस. सेक्शन डाटाबेस यहाँ पे खुल जाएगा. ये हमारा सेक्शन डाटाबेस है. Here we can select steel, cold form steel, timber, aluminum. So in steel, here we will select the Indian one. In Indian, we have to select ISMB 600. Whatever you want to select, you can select from here. So in this, I am going to select ISMB 600 for column, rafter, etc. So here we are selecting ISMB 600. Add and again we are adding ISMB 600. दोबारा ISMB 600 ऐड कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में देखते हैं. Why we are doing this? We will see sometime. Now we have created the property for rafters and columns. Now we have to give property to purlins. So purlins के लिए अपन S सेक्शन में ISMC 150 सेलेक्ट कर लेते हैं. ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है, the main motive to design a section is we have to overcome all the loads with least cost. कम से कम पैसों में हमें लोड को सेव करना है. तो जितना कम छोटा सेक्शन अपन यूज़ करेंगे उतने पैसे हमारे बचेंगे. द लीस्ट सेक्शन वी विल यूज, द मोस्ट कॉल इट विल कट. सो वी हैव टू दिस. अगर ये आगे फ्यूचर में फेल होता है, इफ इट फेल्स इन फ्यूचर, तो हम इसका फिर सेक्शन साइज बढ़ा देंगे. देन वी विल इंक्रीज द सेक्शन साइज.
So here we are taking channel section of ISMC 150 and add, close. Now all the chain section are defined. Now we have to define for, अब हमें डिफाइन करना है पेडेस्टल. पेडेस्टल क्या है? ये फाउंडेशन के ऊपर वाली जो एरिया. These are the pedestal above the foundation and below the plinth level. So for that, taking rectangle, taking dimension of 0.6 cross 0.6, add, and now again dimension of 0.4 or 0.4. This is for the plinth level. Now we have to assign this. First of all, select the nodes ISMB 600. This is for the rafters and column. First of all, we will assign the column. And we this okay, all the column are selected. Assign to sector B. Assign all the column are assigned. Now we have to assign these rafters with another ISMB 600. अब हमें राफ्टर को असाइन करना है दूसरे ISMB 600. अलग अलग हमने क्यों लिए हैं? क्योंकि दोनों में से कोई फेल सकता है, कॉलम या फिर राफ्टर. उसके लिए हमें बस उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है. एनीथिंग कैन फेल, आइदर राफ्टर और कॉलम. सो वी विल चेंज दैट ओनली. This will reduce our cost. Otherwise, when we will change here, all the assigned bills will be changed. The column are assigned, column assign हो चुके हैं. अब हम पॉलिस असाइन कर देंगे. पॉलिस असाइन क्यों कर रहे हैं? पहले राफ्टर असाइन क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी देखते हैं थोड़ी देर. Why we are assigning the purlins, not rafter, we will see in some time. So ISMC 600. Here we'll select beam parallel to cell. All the purlins are selected. Here plinths are also selected, so I'm selecting them. Unselecting this plinth also, and plinth को भी unselect करेंगे. And now assign settle, assign. Yes, all the purlins are being assigned. Now we are assigning the pedestal. So go ahead and G, select these two, going to assign to all the pedestal are accepted. Selected being assigned. So ये सब pedestal भी assign हो चुके हैं. अब हमें प्लिंथ असाइन करना है. प्लिंथ लेवल भी फ्रंट व्यू दोबारा जाएंगे 4.4 कर दिया. We have selected the plinth level view also, and now we are assigning it. Assign, yes. Plinth and we have also assigned. Plinth level view assign हो चुकी है. अब हमें बचा है बस. Now we have only left with the rafters. So we will go to select, missing attribute, missing property, select all the rafters selected. इसलिए हमने राफ्टर छोड़ा हुआ था क्योंकि एट लास्ट हम ऐसे सेलेक्ट कर देते, नहीं तो अगर हम सामने सेलेक्ट कर देते तो काफ़ी दिक्कत हो सकती थी. तो साइड यस, यहाँ से सारे असाइन हो चुके हैं. We are going to threading. Yeah, this is how a warehouse is designed. Yes sir, warehouse हमारा दिख रहा है. क्लोजर जूम कर सकते हैं. This is the purlin. The in orange color, the gray color will be rafters and column, and then blue color is up. So we have applied the property to all these sections. In the next lecture, we are going to apply the loads on it. अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसमें लोड कैसे अप्लाई करते हैं.
आज का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए इसको हम यहीं कट कर रहे हैं। अगले लेक्चर पे हम इसके देखेंगे। ओके, थैंक यू।